All right, welcome back, viewers. Prime Minister Modi has inaugurated the 6.5-kilometer long all-weather tunnel in the form of the Z-Mode tunnel in Jammu and Kashmir, Sonmarg today. Now, the 6.5-kilometer long tunnel, which will provide a year-round access to the Sonmarg tourist resort, is expected to boost tourism and also improve connectivity in the entire area. During the particular inauguration ceremony, the Prime Minister also paid a tribute to the 7 workers who lost their lives during the construction of the tunnel. He also reflected on his deep personal connection with the people of Jammu and Kashmir, also talking about his earlier days of political work in the region. जम्मू कश्मीर की लद्दाख की एक और बहुत पुरानी डिमांड आज पूरी हुई है और आप पक्का मानिए ये मोदी है, वादा करता है तो निभाता है। साथ हमारे श्रमिक साथियों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन हम अपने संकल्प से डीगे नहीं। आज लोग रात के समय लाल चौक पर आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। रात के समय भी वहां बड़ी रौनक रहती है। यही तो नया जम्मू कश्मीर है। कश्मीर तो देश का मुकुट है, भारत का ताज है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये ताज और सुंदर हो। And meanwhile, Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah also thanked the Prime Minister for the development work in the state. Listen in. मैं लोगों को यही कहता हूं कि वजीर-ए-आज़म साहब ने 4 महीने में अपने इलेक्शन का वादा जो है वो पूरा किया है। मेरा दिल ये कहता है कि बहुत जल्दी वजीर-ए-आज़म साहब अपना तीसरा वादा जो योग दिवस पे आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया वो आप पूरा करेंगे। लेकिन आज इस खुशी के मौके पे वजीर-ए-आज़म साहब मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया करना चाहता हूं कि आप इस ठंड में हमारे दरमियान आए, आपने इस टनल का इफ्तिताह किया। बेशक बाहर ठंड क्यों ना हो, लेकिन हमारे दिलों में गर्मी की कोई कमी नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह, क्योंकि जम्मू कश्मीर के साथ आपका बहुत पुराना वास्ता रहा है। So what exactly makes this a highly awaited tunnel? Now, it's a 2-lane road tunnel that's been constructed between Gagangir and Sonmarg in Ganderbal district. It's built at an altitude of over 8,600 feet and will improve connectivity between Srinagar and Sonmarg. In fact, in the future as well, this entire tunnel will be linked to Leh. The distance between Srinagar and Leh will then decrease from 49 km to 43 km. In fact, the travel speed is also expected to increase from 30 km per hour, which is now, to 70 km per hour. Thereby, it will reduce the amount of time that it takes to get from point A to point B. This entire tunnel will also bypass routes that are prone to landslides and avalanches, and also this tunnel is part of an extensive infrastructure project which amounts to over 2,700 crores. Now, this project also includes the upcoming Zojila tunnel, which is expected to be completed by 2028. All in all, it's a big connectivity boost to the region, and it is also expected to have a positive impact on tourism in the entire region. We are in fact reporting from Sonmarg, and my Vijay Mehraj will show you these exclusive pictures of Z-Mode tunnel that has been basically decorated. Now, in fact, workers of the infrastructure company that constructed this tunnel are also going towards this tunnel. It's 6.4 kilometer long tunnel that will provide all-weather connectivity between Sonmarg and Srinagar. Before this, due to heavy snowfall and sub-zero temperature, the road track between Gagangir and Sonmarg would remain always closed, and the tourists who were intending to visit Sonmarg could not visit Sonmarg because of the closure of the road. But now this tunnel is going
going to provide all-weather connectivity between Srinagar and Sonmarg. And now all preparations have been in fact done here at this spot. SPG has already taken this spot in their control from last 2 days. Jammu and Kashmir Police and CRPF personnel also deployed around this venue. It was 2,700 crore project that in fact was executed here in Sonmarg. It's part of Zojila Tunnel project, and the part of Zojila Tunnel is under construction. It's 13.5 kilometer long project, and once the Zojila Tunnel is completed, both the tunnel projects will provide all-weather connectivity between Ladakh and Kashmir Valley. Usually, because of the heavy snowfall, the Srinagar-Leh highway would remain closed for around 6 months, and because of that, the security forces would also face a problem in moving from Srinagar to Ladakh. But once these two tunnel projects, or once this project is completed, they will provide all-weather connectivity between Srinagar and Ladakh. And now you can see this tunnel project is going to provide connectivity between Srinagar and Sonmarg, and it's going to boost tourism in the area. You can see high mountain peaks settle under the blanket of heavy snow, and it's snow that basically attracts tourists from different places of Kashmir Valley. कितनी खुशी हो रही है, ज़डमोर टनल आज जो है खुल रही है। बहुत गरीबों की ये खुशी है जनाब, बहुत बड़ी खुशी है, क्योंकि आप जो है 6 महीने तक सोनमर्ग नहीं आते थे, बर्फबारी बहुत होती थी। इस टनल से कितना फायदा मिलेगा? हम तो सीजन के 6 महीना काम करते थे, गर्मी के 6 महीना हम लोग बंद रहते थे। अभी तो ये हमारी खुश नसीबी है जो 12 महीने के लिए हमारी कारोबार जो गरीब है उनकी खुल गई है। तो लगता है आपको इससे रोजगार भी और ज्यादा बढ़ेगा? बिल्कुल जनाब, इसका तो इस चीज की खुशी है बहुत, आगे तो बहुत इसका हर एक आदमी बचेगा, गरीब हर एक बचेगा। टनल से बहुत सारा फायदा होगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। 6 महीना बिल्कुल बेरोजगारी थी, तो अब जब 12 महीने के लिए टनल शुरू हो जाएगा, इससे गाड़ियां आने लगेंगी, तो टूरिस्ट आएगा तो 12 महीना मजदूर काम करेंगे, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। इससे जो है रोजगार के भी काफी फायदे हैं, रोजगार भी बढ़ेगा इससे। रोजगार तभी बढ़ेगा जब टूरिस्ट आएगा, खाली सोनमर्ग खुलने से रोजगार नहीं बढ़ेगा। रोजगार तभी बढ़ेगा जहां सोनमर्ग के लिए टूरिस्ट आएगा। अब सबसे जम्मू कश्मीर में नंबर 1 पे सोनमर्ग आ जाएगा।